So marketing analytics simply means the application of analytics in the stream of marketing. Because marketing is a so big stream and so important stream these days that marketing में जब तक हम analytics को नहीं लेकर आते, we cannot get that efficient results. Okay? Because आजकल marketers, the management, they are very much interested in knowing कि अगर वो single penny भी marketing में invest करते हैं, then what is the return that they are getting. पहले क्या होता था, people used to spend in marketing, ठीक है, वो personal selling में, advertising में, अलग-अलग marketing channels में invest करते थे with the hope that they will get a return. Okay, but now since there are limited resources and this cutthroat competition, तो आजकल marketers सिर्फ उम्मीद पे नहीं रह सकते कि yes, if we are investing this in our marketing campaign, तो शायद हमें result मिले. So they cannot hope to get the good results. Okay, they definitely want good results. So for that purpose, analytics comes into picture. Okay. So even a single penny that they're spending on their marketing campaigns, they want to know कि इससे हमें क्या result मिलने वाला है. So that is why there is an abundant use of analytics in the stream of marketing. Okay. It's not that ये marketing में use होता है analytics, it can be used in any stream, but marketing में आजकल बहुत ज़्यादा ये use हो रहा है. It's very contemporary. That is why we study it as a separate subject. That की analytics कैसे marketing में useful है, right? So we had done the meaning of marketing analytics, the definition. Okay. Then मैंने आपको ये एक कार का जो steering wheel है इससे समझाया था that what do we mean by models and metrics. Okay, because analytics में, marketing analytics में क्या करते हैं हम, models और metrics की help से okay, हम data को information में convert करते हैं. Analytics का मतलब तो हम पहले समझ चुके हैं. That means using tools and techniques to convert data into useful business information. और वही analytics अगर हम marketing में use करते हैं, that is marketing analytics. So marketing analytics में जब हम data को analyze करते हैं, we take the help of models and metrics. So आज के lecture में हम इनको detail में समझेंगे कि models and metrics क्या होते हैं. So with the help of this car steering wheel, I told you what are models and what are metrics. So metric means जो आपके पास indicators होते हैं, okay? Like आपका petrol का indicator या आपका speed का indicator, कहीं अगर आपने bet लगाई है या नहीं लगाई, hand brake on है, तो वो red light on हो जाती है. So what are these? They tell you the situation. They help you to monitor the situation. Real time situation आपको facts and figures के साथ वो metrics बताते हैं. Whereas what is model? Model is like a GPS model in a car. So car में जो GPS system लगा होता है, that gives you a real time scenario. Okay? That tells you, that gives you the reality. Okay? So वो आपको बताता है कि if you want to reach from one location to another location, what route you should follow. So वो 4-5 route analyze करता है, उसमें से best route आपको निकाल कर देता है. So that is a model. So model क्या होता है? Model रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है ताकि आप रियलिटी में उसको यूज कर सको और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको. तो इन जीपीएस मॉडल देयर इज एन इक्वेशन दैट इज फिटेड, देयर इज अ मॉडल, अ रिलेशनशिप दैट इज फिटेड. ठीक है, वो रिलेशनशिप डिस्टेंस को, ट्रैफिक को वर्कआउट करके आपको एक बेस्ट जो है वे आउट बताता है, बेस्ट रूट बताता है. सो दैट इज अ मॉडल. सो मॉडल एक रियलिटी डिपिक्ट करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है. सो see this picture. This is the picture of an airplane. So during World War II. So here I am going to tell you कि मॉडल को कैसे या मैट्रिक्स को कैसे अलग तरीके से समझा जा सकता है. Okay? Why models and metrics are very important. So during World War III, there were several planes. कुछ planes damage हो गए थे. कुछ planes were not able to reach their destination. And there was one of this plane that reached the destination. So उस प्लेन को अच्छे से स्टडी किया गया एंड स्टडी करके जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने कहा दैट उसकी जो टेल थी, जो प्लेन की टेल होती है ना, दैट टेल वाज डैमेज्ड. उसके ऊपर कई बुलेट स्पॉट्स थे, दैट टेल वाज डैमेज्ड. एंड मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिशियंस दे सेड कि ये टेल डैमेज हुई है तो हम इस डैमेज पार्ट को रिपेयर करें. दैट इज योर ओपिनियन. ठीक है, जब कोई चीज खराब होती है तो आप खराब वाले पार्ट को रिपेयर करते हो. बट देयर वाज वन स्टैटिस्टिशियन नेम्ड एज अब्राहम वॉल्ट. उसने क्या कहा that this is one of the plane that has made its way to the destination. ये प्लेन वापस आ गया, but there were several other planes that could not make their way to the destination. So जो इसके पार्ट ठीक हैं, क्या पता उनके वो वाले पार्ट्स खराब हो गए हो, that is why वो प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया.
तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, सिर्फ डैमेज पार्ट को स्टडी नहीं किया, नॉन डैमेज पार्ट्स को भी स्टडी किया. दैट वी शुड आल्सो स्टडी अ नॉन डैमेज पार्ट्स, बिकॉज जो प्लेन यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, okay, उन प्लेन के उस नॉन डैमेज जो पार्ट इसका डैमेज नहीं है वो तभी यहाँ पर पहुंच पाया. जो प्लेन यहाँ पर नहीं पहुंच पाए उनके वो वाले पार्ट डैमेज होंगे, इसलिए वो पहुंच नहीं पाए. So we must study and we must concentrate on non-damaged parts, because those planes who could not make their way to the destination, उनके वो non-damaged parts, जो इस plane के non-damaged parts, उनके वो वाले parts खराब थे. That is why they could not reach the destination. So all the statisticians, they were just concentrating on repairing the damaged parts. But this statistician, इसका जो है look different था, तो इसका perspective अलग था. He told that we should rather concentrate on the non-damaged part of this plane, because उन्हीं parts के करके यहाँ तक पहुंच पाया है. बाकी planes जो नहीं पहुंच पाए उनके ये वाले parts खराब हो गए थे, that is why वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए. Okay? So here that means there were different perspectives. So the metrics gone wrong. इसकी heading क्या है? Metrics gone wrong. Okay? So किन metrics पे हम ध्यान दे रहे हैं? That is very important. So data analytics में हम कौन सा data input कर रहे हैं? That is very important. So that is why metrics, they are very important in the data analytics or marketing analytics, right? Now let us understand models or metrics को detail में करने से पहले let us understand something about marketing analytics. हम उसका meaning कर चुके हैं. Now what are the trends driving marketing analytics adoption? आजकल इतना contemporary topic क्यों है? What are the factors? What is the rationale? कौन से ऐसे factors करके ये जो है topic इतना ज़्यादा important है? First is accountability. Accountability मतलब कि आजकल जो marketing department है, as I told you, okay, it's not that कि हमें marketing department का काम सिर्फ advertisement देना है या product को बेचना है. It's not limited to that. Okay? They are accountable to every single rupee that is spent on their marketing campaigns. So they are accountable. उनके ऊपर एक responsibility है that they are, आजकल उनका काम सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, rather they are also interested with reducing cost, product की productivity बढ़ाना, because they are in a direct contact with the customer. Okay? So they can know how they can reduce the cost, product को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, productivity कैसे improve कराई जा सकती है. Okay? So that is why analytics has come into picture into the stream of marketing, because they आजकल जो marketing departments है, they have more responsibility than they used to have earlier. They are also responsible for reducing the cost of the product, for increasing the productivity. They're not only responsible for selling the product, rather they're responsible for more than that. So that is why जो है analytics has been attached to the marketing. Second, data-driven presentations. So if a CEO of the company is such that वो marketing से related नहीं है, कोई company का जो top head है, that is not a person of marketing. So वो है जो marketing department को इतनी ज़्यादा importance नहीं देगा, या he will not he will not value the proposals of the marketing department जब तक उसके पास data नहीं है. So अगर marketing department says that if we increase advertisement by this much percentage, तो हमारा revenue इतने % से increase हो सकता है. So ये तो facts and figures है. So everybody will be attracted to these facts and figures. So जब तक कोई एक proposal देगा, that proposal is only theoretical. उसकी इतनी ज़्यादा जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा attention नहीं दिया जाएगा. Rather than कोई ऐसा proposal देता है that is backed by data. So data-driven presentations. So if a marketer says that, अगर एक marketing department कहता है that if we increase our, अगर हम इस marketing campaign को launch करते हैं तो हमारा revenue 10% से बढ़ जाएगा. That is definitely giving a good picture, a rosy picture to a CEO, rather than giving just theories and models. So giving data along with your proposals, that is going to reap much better results to a manager of the company. Next is online data analytics. So this we have been discussing since the beginning that there is a lot of data. हमने last class में पढ़ा था that IBM says, according to IBM, जितना भी world में data है, 90% of the data has been created in the last 2 years. So a lot of data has been generated, and all the data is available online. That is on the cloud. It's from cloud बोलते हैं. That means the existence of data online.
So there is a lot of data that is available online. अगर data online है, definitely उसकी cost भी कम है. That is available at a click. So speed is also high. That is also convenient. कहीं पर भी बैठे हम अपने data को access कर सकते हैं and just on one single click. Okay. So because available of the data online, it is necessary that that data needs to be analyzed before it can be used. Because data is raw, उसको clean करना पड़ता है, then उसके ऊपर test लगाने पड़ते हैं, तभी वो उसको use किया जा सकता है. So because of lot of data that is available online, okay, we need to analyze it. Next driver is reduced resources. So in this era of competition, अगर हम अपने marketing में invest कर रहे हैं और we are not getting the relevant or the equivalent results, okay, so that serves no purpose because every company has limited resources. Okay. So they cannot just keep on investing in the marketing and get no results or with the hope of getting results. So there is no just hope wala point nahi hai aajkal. So whatever they invest, they need to get results out of it, and that great results, they should be backed by facts and figures. So since the companies have a lot of data and they have less resources, so they want to do a lot with their data. That is why they use analytics to refine their data, to process their data and use it for the business decision purposes. So that means the marketers, they must show outcomes. उनको सिर्फ campaigns launch नहीं करने हैं, उनको campaign launch करने से पहले पता होना चाहिए उसके campaign का outcome क्या होने वाला है. Because the resources are limited, they cannot waste their resources in launching useless campaigns जो उनको कोई result नहीं देने वाला. Last is massive data that we have already done. Okay, that there is a lot of data about the customers. Since the marketers, they are in constant touch with the customers, so there are a lot of data regarding the customers that need to be analyzed before it can be used for decision. So all this has result to huge budgets to tiny budgets. Because everything is data, everything is online. We don't need much persons to analyze the data. Data को analyze करने का काम software करेगा. We don't need persons for analyzing the data. Persons होंगे तो cost होगी. Persons कम हो जाएंगे, software से काम होगा तो there will be definitely lesser cost. So as a result of that, huge budgets, they have been converted into tiny budgets. With lesser amount of resources, we can get good results. So that is one of the, these are the factors जिसके करके marketing analytics, it has become so contemporary. So these are the 5 factors जिनके करके marketing analytics has gained importance. Next is what are the advantages? So why that it has been so largely used these days. So इसके benefits क्या हैं to the company as well as to the customer? So first is definitely it drives revenue. पहले क्या होता था, marketing used to be a cost center. Cost center मतलब that departments that generates cost, जो खर्चा accumulate करता है. That is center मतलब जहाँ पर जाके चीजें accumulate होती है. That is center. Cost center मतलब कि ये department, this department generates cost. Profit center मतलब ये department profit generate करता है. So पहले marketing department used to be a cost center. Okay. Because marketing में cost ही होती थी. You cannot measure the return of the marketing. कि आपने advertisement की, आपको नहीं पता उस advertisement से आपकी कितनी sales increase हुई. आपने कोई campaign launch किया, आपको नहीं पता उस campaign से आपका कितना revenue बढ़ा. So marketing earlier used to be a cost sector. कि marketing में हमारी cost ही involved होती थी. हमें नहीं पता होता था कि marketing से हमें कितना revenue. But now with the implementation of analytics, marketing is a revenue center. It's a profit center. It generates profit rather than cost. Cost भी generate करता है, but revenue जो आ रही है एक advertisement या एक marketing campaign तभी accept किया जाता है अगर उस campaign से हमें benefit होने वाला है, which is more than the cost of that campaign. So अगर revenue cost से ज़्यादा होगा तो we will be earning profit. So now marketing departments, they are a profit center rather than a cost center. Because only those projects, those marketing projects will be accepted which will generate profit. मतलब उस marketing campaign की cost कम है as compared to the benefit that we will get from that campaign. कि अगर एक हमें advertisement दे रहे हैं market में, उसकी cost आएगी, तो उस advertisement से हमारी sales जितनी increase होंगी वो ज़्यादा होंगी as compared to the cost. Only then we will be able to earn profit.
किसी काम को अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके काम की कॉस्ट होती है, पर उस काम को करने से फायदा अगर उसकी कॉस्ट से ज्यादा है तो उस काम से हमें प्रॉफिट होगा. So now with the implementation of analytics we can see which marketing campaigns are profitable. So इससे क्या है, marketing department it has become a profit center rather than a cost center. This is the first advantage. Second, definitely it saves money. So how does it save money? Because earlier जो marketing campaigns होते थे या marketing whatever जो भी advertisements, sale promotion activities, people they don't know they don't used to know the results, that what will be the outcome. They just hope that it will bring in good results, but they were never able to quantify कि कितना benefit होने वाला है. But now, okay, the CEOs, the top management, they don't tolerate this approach. Okay? They will accept any marketing tactics or strategies only if it is going to give good results, and that too in terms of facts and figures. Next is persuade executives. ये मैंने आपको भी last slide में भी बताया that our top management they will not accept the proposals that are just on the paper. जब तक आपने डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके फैक्ट्स एंड फिगर्स की टर्म्स में रिजल्ट्स नहीं बताए हैं तो आपका जो है प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. So if you say that if I increase the advertisement by 10%, so my revenue is going to increase by 10 lakh. So if I'm substantiating this with the help of this facts and the figures, so definitely my proposal is going to be accepted. So in order to persuade top management, it is very essential that you have a backup data. Next is sidestep politics. So ये भी मैंने आपको I think last slide में example दे दिया था. Like if my top management, if my CEO is from the market, is not from the marketing background, so he will not be interested in the marketing department definitely. But जब तक उसको अगर हम figures में बताएंगे कि my revenue is going to increase by this %, so he will be happy to accept my proposal. वो उसकी समझ में आएगा. उसको मार्केटिंग की थ्योरीज वगैरह कुछ समझ नहीं आएंगी, बट इफ आई से दैट मैं ये टेक्निक लगाती हूँ तो मेरा सेल्स 10% से बढ़ेगी, उसको समझ में आएगा. सो इट हेल्प्स इन साइड स्टेपिंग द पॉलिटिक्स विद द हेल्प ऑफ फिगर्स. लास्ट इज इट एनकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन. जो हम एनालिटिक्स यूज करते हैं वी सी डिफरेंट सिनेरियोज. आपने सिमुलेशन जब आप यहाँ पर आए थे आपने इंडक्शन प्रोग्राम में कभी सिमुलेशन करी होगी, समझ सर कराते हैं. So उसमें क्या करते हैं, we used to ask you a series of questions to test you what kind of person you are. So they are simulations. So by running simulation, by seeing कि क्या क्या scenarios हैं, okay? अगर economy, अगर GDP rate ये रहता है, okay? So we can predict अगर 2020 में GDP rate 7% है, 5% है, 6% है, okay? तो sales कितनी हो सकती है मेरी. So these are different scenarios. On the basis of scenarios मैं देख सकती हूँ कि मेरे हर सिनेरियो में मेरा क्या रिजल्ट होने वाला है. So ये तभी होगा when I have a data और उस डेटा को मैं प्रोसेस कर रही हूँ. So with the help of data, with the help of analytics, I can use experimentation and test different scenarios. So because we cannot predict the future environment, but we can predict what scenarios can be there. A, B, C, 3 scenarios हो सकते हैं. तो तीनों scenarios में जो है because मैं मॉडल बना लेती हूँ, मॉडल में मैं उन सिनेरियोज की वैल्यूज पुट कर देती हूँ एंड आई गेट द रिजल्ट्स. सो अगर मैं कह देती हूँ कि मेरा जो सेल्स है एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड कर देते हैं, मैं उसका एक रिग्रेशन मॉडल बना देती हूँ. तो एडवर्टाइजमेंट अगर कम है, 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, न्यूट्रल रखनी है. तीनों को मैं अगर पुट करूंगी तो मुझे सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी, तो दोनों में कोरिलेशन है. मैंने कोरिलेशन का एक मॉडल निकाल लिया कि सेल्स एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट है. एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग कम होगी तो सेल्स कम होगी. सो इस मॉडल के बेसिस पे मेरे पास जो भी एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे मैं सेल्स की वैल्यूज निकाल सकती हूँ. सो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ द एनालिटिक्स, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट व्हाई डू वी गो फॉर मार्केटिंग एनालिटिक्स. अभी तक किसी को कोई डाउट? Okay. So by far we have done the meaning of marketing analytics. Okay. What are its drivers? कि क्यों ये आजकल इतना contemporary technique है, and what are its advantages?
मैंने आपको थोड़ा सा बताया था मॉडल्स और मैट्रिक्स के बारे में, अपने हमने उनको डिटेल में पढ़ा। सो मॉडल शुरू कर लेते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मॉडल। सो मॉडल और मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज मार्केटिंग एनालिटिक्स में हम इन दोनों चीजों की हेल्प लेते हैं। जब हम डेटा एनालाइज करते हैं हमें मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, मैट्रिक्स मतलब डेटा, उस मैट्रिक के ऊपर हमने मॉडल लगाना होता है ताकि हम रिजल्ट्स निकाल सकें। इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं, मॉडल्स एंड मैट्रिक्स। सो पहले देखते हैं मॉडल, बिकॉज मैट्रिक्स मीन्स डेटा, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, द क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। सो मॉडल क्या है? मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मॉडल क्या डिपिक्ट करता है? दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। जब हमें रिलेशनशिप पता चल जाएगा तो वो एक मॉडल बन जाएगा। आपने कभी मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करी होगी, वो इक्वेशंस क्या हैं? दे रिप्रेजेंट अ मॉडल। ये इक्वेशन हमेशा ऐसे लिखी जाती है, समथिंग इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एंड समथिंग इज ऑन द राइट। दिस एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड आइटम्स एंड द राइट हैंड साइड। सो वो रिलेशनशिप जब एक्सप्रेस हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज मॉडल। सो मॉडल इज सच रिप्रेजेंटेशन जो एक रियलिटी को डिपिक्ट करता है, जिसको यूज करके आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन देन इक्वेशन में वन आइटम मिसिंग है तो आप वो निकाल सकते हो, सॉल्व करते हो। ऑल ऑफ यू माइट हैव सॉल्व्ड इक्वेशंस लाइक x is equals to y plus b। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? सो ये रियलिटी को सॉल्व करने में हेल्प करता है, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। बिकॉज जब हम रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हमें अगर उनमें से 3 आइटम्स हैं, 2 की वैल्यू बचा है तो एक की वैल्यू, जो थर्ड आइटम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो मॉडल इज व्हाट? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप between two or more variables which helps to depict reality and which helps in solving the problems. So example could be in advertisement effectiveness model. So आपके सामने नीचे ग्राफ बना हुआ, ग्राफ इज देयर, एक्स एक्सिस पे जो है टाइम है, वाई एक्सिस पे सेल्स है। ओके, सो ये मॉडल कैसे बना है? पहले तो वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, देन वो एक टॉप पॉइंट पे पहुंच रहा है, देन वो नीचे आ रहा है। दैट मीन्स पहले तो ये ग्राफ बताता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा बढ़ाएंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग आवर सेल्स विल इंक्रीज, बट अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद अगर आप और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हो तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी। So they will eventually start declining because as a general consumer, अगर आप if you watch TV, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही है, हर ब्रेक में उसी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, हर दूसरी तीसरी उसी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा आपको? Definitely you'll not feel good. You'll feel that the company is not working, कि इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि maybe their sales are very down. You will feel such. So up to some point of time advertisement are effective, but उसके बाद उसका जो है इफेक्ट नेगेटिव आने लगता है। So up to some point कुछ हद तक उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, then they will the sales will increase. But कुछ टाइम के बाद अगर आप और एक्सेसिव करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। सो ये एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया है इस ग्राफ में, दैट इज अ मॉडल। This is an example of advertisement effectiveness model कि अगर हम कुछ टाइम पीरियड तक उसके ऊपर खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट तक, तो वो हमारे सेल्स को इंक्रीज करेगा, बट कुछ टाइम के बाद अगर हम और एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं तो वो हमारी सेल्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ मॉडल। इसमें हमने क्या किया है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखा है, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स। सो इन दोनों चीजों के बीच में हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर लिया। जब वो रिलेशनशिप डिफाइन हो गया वो एक मॉडल बन गया। सो जब वो एक मॉडल बन गया वो एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है। सो इक्वेशन की फॉर्म में एक होता है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर, उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि है सेल्स, बिकॉज़ सेल्स एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट है। जो राइट हैंड साइड पे होता है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, जो अपने आप वेरी करता है।
So अगर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के फिगर्स पता होंगे तो हम सेल्स की फिगर्स निकाल पाएंगे. So it help us in solving the problem because it depicts a reality. एक पिक्चर डिपिक्ट करता है, उसके बेसिस के ऊपर जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसकी हम वैल्यू निकाल पाएंगे. So जब हमारी इक्वेशन बन गई उनमें से किसी एक की वैल्यू मिसिंग होगी तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल पाएंगे. Okay, so ये क्या है? This is a model, right? So what is the purpose of model? To evaluate the impact of input variable. मॉडल का पर्पस क्या है कि हम देखें कि जो इनपुट वेरिएबल है वो आउटपुट को कैसे इफेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पर इनपुट क्या है इस मॉडल में जो मैंने आपको बताया? व्हाट इज द इनपुट ओवर हियर? इनपुट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एडवर्टाइजिंग इज द इनपुट एंड द रिजल्ट आउटपुट इज द सेल्स. सो इनपुट क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज आवर एडवर्टाइजिंग, और आउटपुट क्या है? सेल्स, दैट इज आवर डिपेंडेंट. So इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे हम चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसके बेसिस पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा. सो हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इनपुट वेरिएबल इज एडवर्टाइजिंग एंड द सेल्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट. सो मॉडल क्यों बनाते हैं? बिकॉज हम देखते हैं कि इनपुट का आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल हम कोई भी अगर इनपुट या आउटपुट कुछ भी मिसिंग है हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. सो व्हाट आर द डिसीजंस? हम मॉडल की हेल्प से वी कैन हेल्प टू take various business decisions. Like हमें पता चल सकता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10% बजट और बढ़ाते हैं तो हमारी सेल्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा. So we can always know from this model that if we increase or decrease advertising तो उसका सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. Right? So this is called as model. So model is representation of relationship between two or more variables that depicts reality. और क्यों किया जाता है? Because we want to solve problems. We want to find some missing figures, right? Yes, for those who are online, if you any doubt.